Hello students, today we will start volume by use of triple integral. बेटा first result to find the volume. ट्रिपल इंटीग्रल बेटा अपने में की सी एफ एक्स वाई जेड की वैल्यू की होएगी बेटा 1 फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 1. सो वॉल्यूम ट्रिपल इंटीग्रेशन इन कार्टेशियन फॉर्म बेटा यूज ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz. If change in variable, change of variable in xyz plane to uv plane, we use Jacobian du dv dw. ठीक है बेटा. In cylindrical coordinate we find volume r dz d theta dr. In spherical coordinate r square sin theta dr d theta d phi. Okay बेटा. So in spherical coordinate बेटा first up आया क्वेश्चन है बेटा find volume of sphere. Use triple integration x square plus y square plus z square equal to a square. Okay बेटा. Use spherical coordinates. बेटा spherical coordinates we discussed बेटा in last video y, x and z. This angle is theta and this angle is phi. Okay. Then we put x equal to r cos theta sin phi, y equal to r sin theta sin phi and z equal to r cos theta. Okay बेटा अपने पुट कितना सी बेटा x equal to r cos theta sin phi sorry cos theta cos phi and y equal to r sin theta sin phi and z equal to r cos theta. Okay बेटा. Then volume triple integration बेटा. Okay. Limit you know x square plus y square plus z square किस दे इक्वल आएगा बेटा r square. So r square equal to a square r की वैल्यू कितनी आ गई 0 to a. Okay बेटा. And 0 to a and theta, you know theta lies between 0 to phi. R square sin theta dr d theta d phi. 0 to pi theta the limit beta phi, you know rotate in xy plane 0 to 2 pi. Okay beta. So we find 0 to 2 phi d phi, 0 to pi sin theta d theta, 0 to a r square dr. So 2 pi into sin theta beta minus cos theta, putting limit we have 2 into r cube by 3 0 to a. So we have 4 by 3 pi r cube, sorry a cube. Okay, put the value of a. So beta is the volume of sphere. In next example we find volume of ellipsoid. Volume of ellipsoid x square upon a square, y square upon b square, z square upon c square equal to 1. Okay. First beta we change into sphere, spherical coordinate. Beta किस तरह बेटा put x upon a u, y upon v and z upon c. पहले इसमें x y z में u v plane change कर ले, put in this one. So u square plus v square plus w square equal to 1. Okay, spherical form चला गया है sphere के विच. So मतलब first put x upon a equal to u, y upon v equal to v, z upon c equal to w. Okay बेटा. So x a u, y v z c. Then we find Jacobian del x y z upon del u v w. बेटा फर्स्ट we change x y z फॉर्म किस चेंज करता बेटा u v w. x y z प्लेन किस बोलता बेटा u v w प्लेन चेंज करता. This one equal to del x upon del u. Okay, del x upon del v.
0 B 0 0 0 C. So we have A B C. Okay. So then volume equal to triple integration Jacobian ABC du dv dw over a surface over the sphere की होता है बेटा u square v square w square equal to 1. Okay बेटा. In this बेटा last ਜਿਹੜੀ example ਸੀ बेटा अपनी put u equal to r cos theta r sin theta cos phi v r sin theta sin phi and r cos theta. Okay beta. Then triple integral ABC r square sin theta, okay, dr d theta d phi. Okay beta. Limit beta r u square plus v square w square equal to r square equal to 1 0 to 1 theta 0 to pi 0 to 2 pi. So we have ABC into beta first 0 to 2 pi d phi 0 to pi sin theta 0 to 1 r square. Okay beta. So ABC equal to 2 pi 2, okay, 1 by 3. So 4 pi by 3 ABC. So ये सी बेटा volume of ellipsoid. Next बेटा find the volume of the solid. Next बेटा find the volume of solid x upon a the power 2 by 3 y upon b the power 2 by 3 z upon c the power 2 by 3 equal to 1. बेटा इसका वॉल्यूम अपने फाइंड करना. So first is we write x upon a the power 1 by 3 the square, y upon b the power 1 by 3 the square, z upon c the power 1 by 3 the square equal to 1. Okay, put x upon a the power 1 by 3 equal to u. Okay, first change into u we do. Y upon b the power 1 by 3 equal to v, z upon c the power 1 by 3 equal to 12. Okay beta. So x equal to au cube, y v v cube, z c del. ठीक है बच्चों. Then Jacobian पहला del x y z upon del u v del. We have 3 u square a 0 0 0 3 v square b 0 0 3 w square c. So we have 27 abc u square v square w square. So put in this beta. So we find volume equal to triple integration beta. Okay, Jacobian 27 abc u square v square w square du dv dw. Then change it to beta over किहड़ी अपनी किहड़ा है बेटा over the sphere. Sphere की इक्वेशन की है बेटा over the sphere बेटा और u square plus v square plus w square equal to 1. Change into spherical coordinate equal to 27 ABC triple integration. ओके बेटा की पुट करांगे बेटा और u बी पुट u. ओके u इक्वल टू r sin थीटा
cos phi, v equal to r sin theta sin phi, and z equal to r w equal to r cos theta। बेटा पुट कर रहे हैं वैल्यूज दी। ओके, देन वॉल्यूम इक्वल टू 27 ABC। ओके बेटा u स्केयर r स्केयर साइन स्केयर थीटा cos स्केयर फाई इंटू v स्केयर r स्केयर साइन स्केयर थीटा साइन स्केयर फाई आर स्केयर cos स्केयर थीटा। ओके, फिर उस तो बाद डी यू जैकोबियन बेटा की सी आर स्केयर साइन थीटा, फिर बेटा डी आर डी थीटा डी फाई। सो 27 ABC ट्रिपल इंटीग्रेशन लिमिट रहेगी बेटा यूज आर स्केयर इक्वल टू 1 0 to 1। ओके, थीटा 0 to पाई फाई 0 to 2 पाई 0 to 1 0 to pi 0 to 2 pi। ओके बेटा, r दी पावर 8। ओके, साइन दी पावर 4 थीटा। ओके, साइन दी पावर 5 थीटा बेटा, cos स्केयर थीटा cos स्केयर 5 साइन स्केयर 5 डी आर डी थीटा डी 5। ओके बेटा, मिलो ये वैल्यू आ गई पुत्र r दी पावर 8। ओके, आर स्केयर। ओके, आर दी पावर 8। नेक्स्ट आर दी पावर 8 साइन दी पावर 5 cos स्केयर थीटा cos स्केयर 5 साइन स्केयर 5 डी आर डी थीटा डी 5। ओके बेटा, 27 ABC 0 to 2 pi 5 बेटा cos स्केयर 5 साइन स्केयर 5 डी 5। ओके, इंटू 0 to पाई साइन दी पावर 5 थीटा cos स्केयर थीटा डी थीटा इंटू 0 to 1 आर दी पावर 8 डी आर। ओके बेटा, बेटा first solve this। we know that 0 to 2a fx dx equal to twice 0 to a fx dx। okay, so the first solve this 0 to 2 pi cos square phi sin square phi d phi। okay, this one equal to twice 0 to pi cos square phi sin square phi d phi, because f phi beta equal to cos square phi sin square phi। okay, f 2 pi beta is the result की सी if f 2a minus x equal to fx। okay, f2a minus x equal to fx, f2 pi minus phi। okay बेटा, f2a minus x equal to fx, so और कितना बेटा 2a 2 pi cos square phi 2 pi minus phi sin square 2 pi minus phi। so cos 2 pi minus phi बेटा cos phi, so कितना आ गया बेटा cos square phi sin 2 pi minus phi minus sin phi पर square है बेटा sin square phi, so this one equal to f phi। again this one equal to 4 times 0 to pi by 2 cos square phi sin square phi d phi। okay बेटा, reason बेटा again we use this pi minus phi cos pi minus phi sin pi minus phi, so बेटा square है positive, so we have this। so we write this one 4 into 1 by 1 upon 4 into 2 into pi by 2, use the result, so we have pi by 4।
Okay beta. Next, solve this. 0 to pi sine the power 5 theta cos square theta d theta. Again this one, using this result. 0 to pi by 2 sine the power 5 theta cos square theta d theta. So we have 2 into 4 2 1 7 5 3 into 1. So we have beta कितनी आ गई वैल्यू बेटा इसकी 8 16 पॉन 35 into 35 into 3. Okay, put in this one. So we have beta 27 ABC. So we have beta 27 ABC into value of this beta. We prove pi by 4 into 16 upon 35 into 3 into r 9 by 9 1 put करांगे 1 by 9. So 27 4. So we have 4 pi ABC upon 35. Okay beta. Next example. Find the volume. Beta, next example. Find the volume of tetrahedron bounded by coordinate plane and x upon a plus y upon b plus z upon c equal to 1. A, B, C are positive. बेटा ये स्टेटमेंट की बना अपने वॉल्यूम फाइंड करना बेटा. सो वी हैव कोऑर्डिनेट प्लेन x0 y0 z0 x upon a y upon b z upon c equal to 1. ओके बेटा. a0 0 0 b 0 0 0 c. ओके 0 0 c 0 b 0 a 0. So first we find limit of z. बेटा अपना मेथड बेटा वॉल्यूम यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बेटा dz dy dx. ओके सो बेटा वॉल्यूम दिस वन इक्वल बेटा फर्स्ट z अपॉन c इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन a y अपॉन b. z की वैल्यू 0 टू c इंटू 1 माइनस x अपॉन a माइनस y अपॉन b. फिर बेटा इन xy plane z equal to 0 we have x upon a y upon b equal to 1. So y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा b into 1 minus x upon a. 0 to b 1 minus x upon a. Then x 0 to a. y0 z0 we find y0 then x equal to a. So बेटा solve these equations. 0 to a 0 to b 1 minus x upon a. dz the integration beta z c into 1 minus x upon a y upon b dy dx. c 0 to a 0 to b 1 minus x upon a. So y minus xy upon a minus y square upon 2b.
ठीक है बेटा, dx लिमिट 0 to b इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए। ओके बेटा, y बेटा इंटीग्रेशन वन द एक्स वाई अपॉन ए माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2b। सो वी हैव सी बेटा 0 to a b 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स b 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2b, सॉरी b स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन ए द स्क्वायर अपॉन 2b। ओके बेटा, we find this 1 minus b into 1 minus x upon a b upon a x 1 minus x upon a minus b square upon 2b 1 minus x square upon a dx. So we have beta bc 0 to a 1 minus x upon a dx minus bc upon a, okay, 0 to a x minus x square upon a dx. Okay beta, next minus bc upon 2 0 to a 1 minus x upon a the whole square dx. Okay beta, then beta solve this bc x minus x square upon a 0 to a minus bc upon a x square by 2 minus x cube by 3a 0 to a minus bc upon 2 1 minus x upon a the cube upon 3 0 to a. Okay बेटा, first bc a minus a square a ना cancel a by 2 minus bc upon a square by 2 minus a square upon 3 minus bc by 2 a 0 minus 1 by 3. Okay beta, we find this value, okay, 0, then we find, okay beta, bc, okay, 0 a put कितनी बेटा वैल्यू है a अपॉन a x माइनस a, सॉरी 3 अपॉन बेटा माइनस, देखिए बेटा इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स अपॉन a द क्यूब अपॉन क्यूब, नेक्स्ट माइनस 1 बाय a, सो प्लस a b c. ओके, सो वी हैव बेटा a b c बाय 2, बेटा b c कॉमन ही कर लो, इसको a b c बाय 2 माइनस बेटा ए ना एक ही हो रहा है कैंसल, सो वी हैव ए बी सी अपॉन 6, ओके, ए बी सी अपॉन 6, देन माइनस माइनस प्लस, सो वी हैव ए बी सी, एक मिनट बेटा माइनस सी हो रहा है माइनस, देन माइनस माइनस प्लस माइनस a b c upon 6, so we have LCM 6 3a b c minus a b c minus a b c, so we have a b c upon 6. So beta, in my next video we continue volume, examples of volume. In my next video we will discuss volume of use triple integral, find volume of cylinder, cone, truncated cone and volume between two surfaces. So thank you very much.